Hello everyone, welcome to Prep IS, myself Karuna Mishra, and we will be continuing with our crash course series from Science and Technology catering to UPSC Prelims 2023 aspirants. As I have started with my Space Technology Module 1, I will continue by taking the current affairs, understanding that current affairs, going back to the basics and then integrating, which shall help me in the prelims examination. हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो फर्स्ट लेक्चर था स्पेस टेक्नोलॉजी का उसमें वी हैड एन अप्रोच इन विच लेट अस से आई स्टडीड अबाउट एन मिशन दैट मिशन कैन बी गगनयान मिशन और आदित्य L1 मिशन और इवन लेट अस से आर्थमिस मिशन एटसेट्रा और Chandrayaan mission, in which I understood the mission, I understood the connection of that mission with the other missions or global missions and how it will help in the overall understanding of space. On similar lines, I have again picked out the important current affairs and also taken the very important basic concepts such as black hole, gravitational waves, which are always asked. For example, when we were doing the Aditya L1 mission in the previous lecture, we talked about the surface of the sun, chromosphere, coronal holes, different types or what are the causes of solar flares, how do they create geomagnetic storms, etc. Because whenever a mission is launched, it is not just about that mission but also how that mission will impact our understanding of that particular it can be a planet, a star, an asteroid, etc. Right? So we will continue with the same approach. We are continuing with space technology part 2, and the first news article that I am going to discuss along with the basic understanding is the ISRO's orbital experimental module, also called as POEM. So why POEM? P stands for PSLV. PSLV, which is my Polar Satellite Launch Vehicle. Now what is a launch vehicle? Launch vehicle is that rocket which takes the payload into the space. So in India, ISRO has indigenously developed 4 stages of launch vehicles. The SLV stage, that is 4-stage solid fuel, then the augmented SLVs, then the PSLVs. The PSLVs actually turned out to be the game changer for ISRO, the workhorse of ISRO. Why is it called the workhorse of ISRO? Because it is the revenue earning technology for ISRO, and also it actually placed ISRO in the map of the world. Why? Because of the liquid fuel. That liquid fuel not only provided thrust but also gave more capacity to take more payload into the higher orbits. It was PSLV which was used in Chandrayaan 1 mission. So I cannot just put the satellite into the geosynchronous orbit. Geosynchronous orbit यानी 36,000 किलोमीटर वाली. अब मैं उसके बियॉन्ड भी लेके जा पा रही हूँ. राइट? तो थोड़ा बहुत डिस्कशन हमने PSLV का किया. नाउ कमिंग टू दिस टॉपिक विच इज PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल पोएम. क्या है ये पोएम? इट इज़ अ प्लेटफॉर्म विच विल अलाउ इन ऑर्बिट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट. यानी जब मेरा लॉन्च व्हीकल ऑर्बिट में होगा, पेलोड लेके जाएगा एट दैट पर्टिकुलर टाइम ऑन द 4th स्टेज. PSLV में 4 स्टेजेस होती हैं. The first stage is the solid stage followed by liquid stage, then again solid stage and then again liquid stage. तो जो आपकी 4th stage है at that time I will perform the in orbit scientific experiment. यानी एक पंथ दो काज जिसको बोला जाता है. आप एक ही टाइम पर आप लॉन्च व्हीकल से आपके सैटेलाइट भी लॉन्च कर रहे हैं and you are doing the scientific exploration as well. For this there shall be a dedicated navigation guidance control system which shall act as the brain for the platform, and the power source shall be the solar panels as well as lithium ion battery. So again a quick revision: PSLV POEM, which stands for orbital experiment module, which shall conduct in orbit scientific experiment. In which stage? The 4th stage. The 4th stage is the liquid stage for PSLV. इसमें मैंने एक डेडिकेटेड नेविगेशन गाइडेंस सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम लगाया विच विल एक्ट एज द ब्रेन एंड द पावर शैल बी सप्लाइड बाय सोलर पैनल्स एज वेल एज lithium ion batteries. So now let us have a very quick review of all the launch vehicles. In launch vehicles, the first stage is the SLV stage या SLV3. अगर आपको याद हो, आपके 1 and 2 फेल हो गए थे. SLV3 was the सक्सेसफुल वन. 4 स्टेजेस होती है, सॉलिड बूस्टर्स होते हैं. सॉलिड बूस्टर यानी सॉलिड फ्यूल विच प्रोवाइड दी थ्रस्ट. बट इसकी वजह से आई एम नॉट एबल टू कैरी अ लॉट ऑफ पेलोड और मैं लोअर अर्थ ऑर्बिट के बियॉन्ड नहीं जा पा रही थी.
सिमिलरली ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में भी मैं लो अर्थ ऑर्बिट के बियॉन्ड नहीं जा पा रही थी. अगेन द फ्यूल यूज्ड इज द सॉलिड फ्यूल. इट इज 5 stages, right? Then you have the third stage, which is my PSLV. PSLV stands for Polar Satellite Launch Vehicle, जिसमें मैंने finally liquid propulsion system I had indigenously created, and it has helped me a lot in providing good launch vehicle technology by providing enough payload into the higher orbits up to geosynchronous orbit यानी 36,000 kilometers, जो कि मेरी टेलीकॉम सैटेलाइट्स के लिए भी यूज़ होता था. एंड आई कैन ऑल्सो टेक माई पेलोड बियॉन्ड जियोसिंक्रोनस और जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, दैट इज as seen in the Chandrayaan 1 mission, that PSLV was used for carrying the orbiter or the Chandrayaan mission to moon's orbit. Last and the most advanced launch vehicle is the GSLV, that is geosynchronous launch vehicle, जिसको अब हम सिर्फ launch vehicle Mark 3 भी बोलते हैं. बिकॉज ये केवल जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट्स के लिए यूज़ नहीं हो रहे, ये और भी इट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर लो अर्थ ऑर्बिट ऑल्सो. आपने अगर रिसेंटली करंट अफेयर्स देखे होंगे, न्यूज़ देखी होगी, तो आपने एक प्राइवेट टेलीकॉम एजेंसी के भी आपने सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किए हैं बाय यूजिंग GSLV. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द पेलोड कैपेसिटी एटसेट्रा ऑफ दीज डिफरेंट लॉन्च व्हीकल्स. मैंने इसमें GSLV में मार्क 2 और मार्क 3 को अलग से लिखा हुआ है, राइट. सो फर्स्ट SLV आप देखेंगे कि केवल 40 kg पेलोड कैपेसिटी है. विद ASLV इट ओनली गॉट इंक्रीज टू 150 kg, बट with PSLV there was a change of the game. 1860 kgs and more than 400 kilometers तक I could take my payload. That means I could go much beyond the low Earth orbit. And with GSLV I could carry 2200 kgs with GSLV Mark 2, and with GSLV Mark 3, which is the most sophisticated launch vehicle India has indigenously created, I could carry or ferry payload up to 4000 kg और 4 टन कैपेसिटी. GSLV Mark 3 को 4 टन कैपेसिटी लॉन्च व्हीकल बोला जाता है, जो कि जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में कैन कैरी पेलोड अप टू 4 टन्स, and low earth orbit में it can carry up to even 8 tons or 8,000 kgs, right? So this was a quick review of launch vehicles. पर इसके अलावा अब आप देखिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी क्रायोजेनिक और लिक्विड इंजन बना लिया है, सो यू आर नॉट यूजिंग दी सॉलिड इंजन और सॉलिड फ्यूल बेस्ड SLVs and ASLVs. So for low earth orbits I have created a small satellite launch vehicle also called as SSLV, very important for your prelims. ये क्या है? It is a 3-stage launch vehicle. Alright, the 3 solid propulsion stages, इसकी जो 3 stages हैं, those are solid propulsion stages and the liquid propulsion based velocity trimming module. Last में आपने liquid propulsion based velocity trimming, that is adjusting the velocity by using the liquid fuel, आपने टर्मिनल स्टेज पे रखा है. एंड यू यूज दिस पर्टिकुलर लॉन्च व्हीकल फॉर लॉन्चिंग स्मॉल माइक्रो नैनो सैटेलाइट्स विच आर ओनली अप टू 500 kg ऑफ मास अप टिल 500 kilometers. सो नाउ लेट अस रिवाइज क्विकली. SLV ASLVs आर रिडंडेंट टेक्नोलॉजी, जो सिर्फ सॉलिड बेस्ड फ्यूल या सॉलिड प्रोपल्शन से स्टेजेस होती थी. SLV में 4 and ASLV में 5. I do not use it. What I am using right now is PSLV, which uses liquid stage in the 2nd and the 4th stage, liquid propulsion system. इसके अलावा I am using GSLV, which uses cryogenic engine or cryogenic fuel. Now what is cryogenic fuel? We have discussed it earlier also. Cryogenic fuel is when liquid hydrogen is used as the fuel and liquid oxygen, LOX, is used as the oxidizer, then that fuel or that engine technology is called as cryogenic engine technology. और cryogenic engine technology के अलावा GSLV के अलावा I have also created small satellite launch vehicles, SSLVs, जो कि होते हैं 3-stage propulsion system, solid, and last stage में you are using liquid propulsion based velocity trimming. Very important. Where do I use it? I use it in the lower orbits up to 500 kilometers for launching small satellites. Now coming to another initiative which is related to launching is
Agnikul Cosmos, which is name of a startup, it is incubated in IIT Madras. In last class also I had discussed that the government of India, ISRO, are promoting, are requesting the private players, the educational institutes, the areas of institutes of excellence to now participate into space technology, and this is one such example. So Agnikul Cosmos, which is a startup, it is incubated by IIT Madras, very important, has conducted the flight acceptance test for its 3D printed rocket engine अग्निलेट. इसमें 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. 1, अग्निलेट क्या है? अग्निलेट इज अ 3D printed rocket engine. Point 1, 3D printing, which is also called as additive manufacturing, is now becoming the answer to the fourth industrial revolution and related manufacturing needs. So सबसे पहले what is अग्निलेट? अग्निलेट is a 3D printed rocket engine. किसने बनाया है? अग्निकुल कॉस्मोस. अग्निकुल कॉस्मोस क्या है? अग्निकुल कॉस्मोस is a space tech startup which is created by IIT मद्रास. इसमें कौन सा इंजन यूज कर रहे हैं? सेमी क्रायोजेनिक. नाउ मैम व्हाट इज सेमी क्रायोजेनिक? सेमी क्रायोजेनिक इंजन इज वेयर आई एम यूजिंग लिक्विड केरोसिन at room temperature as the fuel. What is important is room temperature. That is, I do not need to reduce the temperature to a very abnormal or to very very lower temperatures जो कि difficult होते हैं maintain करना. मैंने रूम टेम्परेचर पे जो लिक्विड केरोसिन है, आई एम यूजिंग इट एज द फ्यूल एंड द ऑक्सीडाइजर इज द सुपर कूल्ड और सुपर कोल्ड लिक्विड ऑक्सीजन along with the kerosene, right? So I am using a mixture of liquid as well as cryogenic fuel. Liquid fuel क्या है? मेरा रूम टेम्परेचर पर केरोसिन. क्रायोजेनिक फ्यूल क्या है? मेरा लिक्विड ऑक्सीजन. ऑलराइट, सो दिस इज अ 3D printed rocket engine. It will power the company's launch vehicle अग्नि बाण. अब इसमें अग्नि लेट क्या हो गया? रॉकेट. अग्नि बाण क्या हो गया? लॉन्च व्हीकल. और इस कंपनी का नाम क्या है? अग्निकुल कॉस्मोस, राइट? कहाँ पर इंक्यूबेट हो रही है? इन IIT मद्रास. नाउ द लॉन्च ऑफ अग्नि बाण विल बी द सेकेंड बाय अ प्राइवेट फर्म. सबसे पहले किसने करा था? द हैदराबाद बेस्ड स्काई रूट एरोस्पेसेस विक्रम एस, जब जो कि नवंबर 2022 में हुआ था. अगेन दिस इज नॉट वेरी सोफिस्टिकेटेड, तो ये केवल लो अर्थ ऑर्बिट तक ही पेलोड्स को ले जा पाएगी. दैट इज अप टू 300 kgs इन द लो अर्थ ऑर्बिट. नाउ कमिंग टू अनदर important discussion related to propulsion system, which is my hybrid propulsion system. अब ये जो हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम है, ये किसने डेवलप करा है? वन, इसरो, राइट? इसरो ने इसमें हाइब्रिड यानी कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू. व्हाट इज द कॉम्बिनेशन? द कॉम्बिनेशन इज HTPB, which stands for hydroxyl terminated polybutadiene as the fuel and liquid oxygen as the oxidizer, right? So unlike solid and liquid combination, I am using the solid fuel. Solid fuel क्या है? HTPB. Solid fuel is HTPB and the oxidizer is liquid. So hence the hybrid propulsion system where the fuel is solid and the oxidizer is liquid. Why are you creating this or why are you testing this hybrid propulsion system? Because it is more efficient, greener and safer to handle. Again, liquid fuels and cryogenic fuels are not just sophisticated technology, but they are not even easy to handle. So we studied about PSLV POEM, which is in orbit experiment. Then we moved on to understanding the launch vehicles. We did a quick revision of the 4 types of launch vehicles. Then we did a quick revision about the small satellite launch vehicle. Then we did a quick revision about a private firm, Agnikul Cosmos, which has created a new rocket engine, that is Agnilet. और इसका लॉन्च व्हीकल क्या है? अग्नि बाण, जो कि क्या यूज कर रहा है? इट विल बी यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड केरोसिन एंड द सुपर कूल लिक्विड ऑक्सीजन एज द फ्यूल. देन वी डिड अ डिस्कशन अबाउट द हाइब्रिड propulsion system, which will use a combination of solid fuel and the liquid oxidizer, right? Now let us talk about the next topic, which is my NISAR satellite और NASA ISRO synthetic aperture radar satellite. अब ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट
टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए. क्यों? बिकॉज नासा एंड इसरो हैव कम टुगेदर अगेन आफ्टर Chandrayaan also. The Nisar satellite has been in news for some time. And why have I developed this satellite? इसको याद करने के लिए सीधी सी बात याद कीजिए कि ये रिसर्च बेस्ड सैटेलाइट. ये क्या रिसर्च करेगी सर? ये बनाएगी आपके मैप्स. It will make maps. What kind of maps? It will make the cryosphere map. What is a cryosphere? The frozen area of the earth. It will do the mapping which is related to climate change. It will do the mapping which is related to the aerial distribution. It will do the mapping which is related to the forest distribution, the ice cover, the water cover, etc. It will not just do the mapping, it will also take the data which is related to the ecosystem, the ice mass, etc. अब आप दोबारा इसको समझने की कोशिश कीजिए विदाउट गेटिंग इनटू द डिटेल्स कि ये सैटेलाइट क्यों बनी है. पहली चीज़, ये लो अर्थ ऑर्बिट के लिए. लो अर्थ ऑर्बिट पे यू जनरली हैव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स. फर्स्ट पॉइंट, क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, क्यों बनाई है हमने ये सैटेलाइट? किसने? नासा ने और इसरो ने. फॉर डूइंग द रिसर्च इन द एरिया ऑफ एनवायरमेंट, फॉर क्रिएटिंग मैप्स एंड फॉर एनालाइजिंग डेटा. इट विल बी डुअल फ्रीक्वेंसी सैटेलाइट. क्या मतलब होता है डुअल फ्रीक्वेंसी? दो बैंड्स पे ये काम कर सकती है. इट विल हैव बोथ एल बैंड as well as S band synthetic aperture radar, right? So it will be in the low earth orbit. It is developed by both NASA and ISRO. It will do mapping and data for understanding Earth's ecosystem, ice mass, etc. And it will have the dual frequency, and the dual frequency is in the L band as well as S band. This is about your NISAR. Now let us understand what are the areas that it is going to cover. It will be doing the cryosphere tracking. What is cryosphere? The frozen area, right? क्या करेगा ये? It will measure the changes in the permafrost कि कितना आपका आइस कवर या ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, कितनी आइस शीट्स मेल्ट हो रही हैं. What is the status of the oceans? Is the sea level rising? इसके अलावा it will also do the ecosystem and resource tracking, right? What does it mean? It will measure the forest cover, land use change, aid the oil, gas, underground water, coastal ecosystem, soil moisture, water resources, etc. Apart from that, it will also do the disaster management, location, impact of the earthquake, of a disaster, volcanic activity, oil spills, etc. Going back, मैंने आपसे क्या बोला था? हमको निसार को कैसे याद रखना है? इसरो एंड नासा ने मिलके एक सैटेलाइट बनाई है. कौन सी? रिमोट सेंसिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन टाइप, which will not just map the area, will also create data in order to understand the ecosystem better. I think now it will make sense. This is how you have to remember. Apart from NISAR, the other joint collaboration of ISRO are Megatropics. ये फ्रांस के साथ है. Megatropics, it is already functioning, it is already launched. ISRO and CNES क्या करने के लिए Megatropics करा है? To study the tropical atmosphere and climate change. Next is SARAL, again with France, CNES, to study the ocean from space. Now this is related to ocean. Megatropics is related to the atmosphere and climate change. SARAL is basically for ocean. Then you have LUPEX, important mission with Japan. जापान की जो JAXA एजेंसी है उसके साथ ISRO is creating this particular mission to study the south pole of moon, and for that they will be sending the lander and a rover. Last is Trishna mission, which is again with CNES. It will be the earth observation satellite mission with thermal infrared imager, right? So I notice that out of the 4, 3 are related to environment as well as climate and ocean, and one, which is LUPEX, which is with Japan, is to understand the moon. Now coming to another very important topic, that is the types of orbit. Since we are doing launch vehicle, we are talking about satellites, let us quickly revise what are the different types of Earth's orbit. ठीक है, ये मैंने इन्फोग्राफिक इंसाइक्लोपीडिया से लिया है क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से इसमें सारी ऑर्बिट्स को एक्सप्लेन किया गया है. जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं. अगर मैं सिर्फ इंक्लिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, देन आई हैव द इक्वेटोरियल ऑर्बिट, द पोलर ऑर्बिट एंड द इंक्लाइंड ऑर्बिट. What do I mean by equatorial orbit? जहाँ पर
the payload or the satellite is launched in the equatorial plane, right? As you can see, the plane is through the equator. The satellite tracks over the equator and it is then synchronized as per the Earth's orbit. Polar orbit में the satellite moves from pole to pole. So the plane through the Earth's axis. What is the plane? The Earth's axis. Earth moves around sun on its own axis, that is called as rotation. So taking that as a cue, I am launching my satellites. Third is inclined orbit. What do I mean by inclined orbit? That it is neither in the equatorial plane nor in the polar plane, but at a certain angle of inclination. ये certain angle of inclination है, right? I'll remove these so that we get a better idea. Right? So this is a certain angle of inclination, certain angle from the equator. Then it is called as the inclined orbit. ये हम जियोसिंक्रोनस के टाइम पे पढ़ते हैं. जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होती है? We'll do the shape क्या है? Circular as well as elliptical. In circular, जैसा आपका एक सर्कल बनता है, it is equidistant from the center. In elliptical you have something called as perigee and apogee. Perigee, apogee आप geography में भी पढ़ते हैं when you talk about the tides. So what is apogee? Apogee is the farthest distance between any two bodies, right? So apogee will be when Earth and Moon are at the farthest distance. In terms of satellite, when the satellite is at the farthest distance from Earth, then that point is called as the apogee. And the closest distance is called as the perigee. ये कब होगा? जब मेरा satellite elliptical orbit में move करेगा. Then I have something based on the altitude. Now this is what is most commonly used, such as low Earth orbit, the medium Earth orbit, or the geostationary orbit. Geostationary orbit is a variety of geosynchronous orbit. लो अर्थ ऑर्बिट मेरी क्लोज टू अर्थ होती है अप टू 2000 किलोमीटर्स. मीडियम अर्थ, अब लो अर्थ ऑर्बिट को हम जल्दी क्विकली रिवाइज करें. लो अर्थ ऑर्बिट, सिंस इट इज क्लोजर टू द अर्थ, आई फाइंड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स इन दिस पर्टिकुलर ऑर्बिट. आई फाइंड communication satellites in this particular orbit. I find defense satellites in this particular orbit. I find spy satellites in this particular orbit. I find earth observation satellites in this particular orbit. यानी remote sensing such as OceanSat, CartoSat, which is done for geological mapping. आपको water resources map करने, you go for remote sensing. आपको tree cover, आपको forest cover assess करने, you go for remote sensing satellites. If you want to assess the overall mineralogical map, then you go for remote sensing satellite. Then comes earth observation. Earth observation क्या? जो हमने निसार में देखा, that I am trying to assess the cryosphere of that particular region or of the earth. I am trying to assess the ocean, whether the sea level is rising. So these are more research based satellites, which are earth observation satellite. Communication satellite, again, which are used for communication. Then you have spy satellites or defense satellites. Why? Because you need to keep eye on a particular area. ये सब मुझे कहाँ मिलेगा? लो अर्थ ऑर्बिट. In addition to that, the International Space Station, telescopes, or any type of research apparatus or equipment is also launched in the low Earth orbit. हमारा गगनयान मिशन भी कहाँ पर लॉन्च होगा? लो अर्थ ऑर्बिट. मीडियम अर्थ ऑर्बिट इज यूज्ड ओनली फॉर टेलीकम्युनिकेशन. मीडियम अर्थ ऑर्बिट बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है. It is nearly up till 10,000 kilometers, let us say, and it is only used for navigation satellites such as GPS, GLONASS, Galileo, etc. But the navigation satellite system of India, that is IRNSS or NAVIC, does not use medium earth orbit. It uses geosynchronous and geostationary orbits. तो इस चीज़ में हमको कंफ्यूज नहीं होना है. जनरली मीडियम अर्थ ऑर्बिट हमारा नेविगेशन में यूज होता है. इट इज़ यूज फॉर नेविगेशन जनरली, बट नाविक और इंडियाज नेविगेशन सिस्टम does not use medium earth orbit. It uses geosynchronous orbit. Last orbit is the geostationary or geosynchronous orbit. When in the equatorial plane, the satellites are launched at
almost 36,000 kilometers, or to be precise 35,800 kilometers at the equatorial plane, and their speed is synchronized. The rotation of the satellite is synchronized with the revolution of the satellite, the revolution of the satellite around the earth is synchronized with the rotation of the earth. Then it is called as the geostationary ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. जियो और स्टेशनरी, ये जो सैटेलाइट्स हैं ये हमेशा ऐसे लगते हैं कि एक पॉइंट के ऊपर स्टेशनरी है. जियो सिंक्रोनस में डिस्टेंस 36,000 होता है, बट ये एक इंक्लिनेशन पे होती है, तो इसलिए आपको ये नॉर्थ साउथ मूव करती हुई दिखती है. तो टू रिमेंबर, ऑल द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स, but all the geosynchronous satellites are not the example of geostationary satellites. Now coming to IRNSS. Why am I teaching you IRNSS right before prelims? Because the central government is pushing the smartphone makers to enable support for its Navik navigation system in the new devices from 2024. यानी सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि अब आपको नाविक सिस्टम भी मोबाइल फोन्स में इंस्टॉल करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू सेल योर स्मार्टफोन्स इन इंडिया. सो लेट अस अंडरस्टैंड ये जो इंडिया का नेविगेशन सिस्टम है ये है क्या. आपको याद होगा, ये आपने स्टोरी सुनी होगी कि हमने इंडिया का इंडिजिनस नेविगेशन सिस्टम इसलिए बनाया था क्योंकि कारगिल वॉर के टाइम यूएस ने हमको कोऑर्डिनेट्स शेयर करने से डिनाई कर दिया था. इंडिया वॉज एट अ पोजिशन ऑफ डिसएडवांटेज व्हेन इट कम्स टू ज्योग्राफी. राइट, आपका दुश्मन पहाड़ के ऊपर था, आप नीचे थे. जो आपके हिमालयाज़ हैं दे आर एसिमेट्रिक फोल्ड्स, यानी एक साइड से खड़े पहाड़ हैं, उनको चढ़ना मुश्किल होता है. दे आर डिफिकल्ट टू बी स्केल्ड. सो व्हेन वी आस्क्ड फॉर द कोऑर्डिनेट्स, यूएसए डिनाइड द कोऑर्डिनेट्स, एंड दिस एक्चुअली created an alarm for India, and India created its own indigenous system. So Navik is not a latest system. In fact, it is very old, somewhere around 2000s, right, 2007. But now the central, अब ISRO is also planning to upgrade Navik. ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो रही हैं, एकदम से नहीं हो रही हैं, सब एक प्रोसेस से हो रही हैं. सबसे पहले ISRO नाविक को अपग्रेड करेगा. करंटली नाविक में 7 सैटेलाइट्स हैं. What are these 7 satellites? 3 in the geostationary orbit and 4 in the geosynchronous orbit. Right? When I talk about geosynchronous, मैंने आपको क्या कहा था, ये एक इंक्लिनेशन पे होते हैं. So at 29 डिग्रीज टू इक्वेटर. जियोस्टेशनरी इक्वेटोरियल प्लेन में होगा. जो आपकी नाविक सिस्टम है अभी ये केवल 1500 किलोमीटर्स फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ इंडिया को केटर करता है. इट इज़ प्रोवाइडिंग स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सिस्टम or services and certain restricted services which is only for military and security uses. Where will I use IRNSS or India's regional navigation satellite system or indigenous navigation system? In terrestrial, aerial and marine navigation, for disaster management, vehicle tracking and fleet management, precise timing, mapping and geodetic data, terrestrial navigation aid for hikers and travelers, and visual voice navigation for drivers. All of these points are extremely important for your exam. ये सारी की सारी applications मुझे याद होनी चाहिए, and कितने satellites हैं ये मुझे याद होनी चाहिए, because previously such question has been asked. So remember, 1500 kilometers from the boundary, there are 7 satellites, 3 in the geostationary and 4 in the geosynchronous, at an inclination roughly 30 or 29 degree, you can say. It will provide basically the positioning system, positioning services which will be open to all for civil purposes, and restricted services for military and defense. हमने क्योंकि government is pushing that the Navik should be used and should be installed in the smartphones which will be sold by the next year, it becomes important. You can pause the video and write down these important applications. These are the important navigation systems of the world. Now coming to the next category of the satellites, which are communication satellites. We have briefly discussed what the remote sensing satellites are used for. They are used for basically taking good quality pictures. और वो जो good quality pictures हैं वो सरकारी काम जैसे कि making maps
resource identification, disaster management, weather management, etc., or for defense purposes can be used. Can also be used by private players such as for communication. आपका जो नेशनल मेरा सिस्टम है, आपने पहले एप्पल सैटेलाइट्स लॉन्च करी थी, बट देन विद इनसैट एंड जी सैट विच इज़ माई इंडियन नेशनल सैटेलाइट and geosynchronous satellite system, India has become the largest domestic communication satellite system in the Asia Pacific region, right? With 9 operational communication satellites in the geosynchronous orbit. Geosynchronous orbit यानी 36,000 kilometers. कब से शुरुआत हुई थी? In the year 1983, right? And this has basically revolutionized communication sector. Do you know that India is one of the biggest broadcaster for the African region also? आपके TV broadcasting में with the use of communication satellites we have done some marvelous work. In fact, Airtel is one of the biggest service provider for telecom also in the African region. We have our presence in the Southeast Asia as well when it comes to communication satellites. These are the different application of communication satellite. It is for telecommunication, TV broadcasting, news gathering, weather forecasting, disaster warning, search and rescue operations. Now coming to the Earth observation program. मैंने आपको बोला था जब मैं निसार सैटेलाइट के बारे में डिस्कस कर रही थी that these are state of the art, very sophisticated remote sensing satellites, right? Remote sensing satellites हैं, बहुत ही sophisticated हैं, and they basically are observing Earth for research purposes. So what do? They send the signals to Earth and monitor the changes which occur on Earth's surface, hence called as the Earth observation. मैंने इससे ज़्यादा इस पर नहीं लिखा हुआ है. EOS-01 आज से 1 साल पहले पहली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट थी जो लॉन्च हुई थी. ओवर द टाइम नाउ इसरो इज मूविंग टूवर्ड्स research rather than only catering to the basic needs of communication and remote sensing. Now coming to, अब हमने एक जल्दी से रिव्यू ले लेते हैं. हमने लॉन्च व्हीकल समझ लिए, हमने टाइप्स ऑफ सैटेलाइट समझ ली, हमने टाइप्स ऑफ ऑर्बिट समझ लिया, हर ऑर्बिट में किस टाइप की सैटेलाइट लॉन्च होती है वो हमने समझ लिया. वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द नेविगेशन सिस्टम ऑफ इंडिया. वी ब्रीफली डिस्कस्ड अबाउट द कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स ऑफ इंडिया एज वेल. Now coming to the mission to Venus, which is my Shukrayaan-1 mission. What is it? It is an orbiter mission, similar to the Mars mission. Mars mission MOM stands for Mars Orbiter Mission or the Mangalyaan. It will also be an orbiter mission. It is delayed until 2031. ये generally आपका अभी तक 25 तक it was believed to be launched, but अब इसको 31 तक डिले कर दिया गया है. क्यों डिले किया गया है? Because 2031 में in Earth and Venus will be at the closest distance. So हमारा fuel consumption and overall cost of the project will become very less. Now, why am I doing this particular project? Or why am I undertaking this particular mission? So this is expected to study the Mars's geological, volcanic activity and the emissions on ground, wind speed, cloud cover and the characteristics in this elliptical orbit. अब why am I so much interested in Venus? देखिए, मार्स के अलावा Venus and Mercury are other terrestrial planet. Mercury is way too close to Sun. Venus is called as the twin sister to Earth, right? Because it has similar, structure to Earth. क्योंकि terrestrial planet है, we are basically trying to find resources and the possibility of life on these planets, and also to understand how the planets have evolved or the solar system has come into existence. So I am going to understand all of this by studying my Shukrayaan or Shukra ग्रह or the Venus planet. Venus के और जो बाकी के मिशंस हैं, these are, see, आप जब भी कोई इंडियन मिशन लॉन्च करेंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल मिशंस बिकम इंपॉर्टेंट. सो द अदर मिशंस टू वीनस आर वेनेरा प्रोग्राम बाय रशिया, अकात्सुकी प्रोजेक्ट बाय जापान, द वेरितास प्रोजेक्ट बाय Veritas, which is the emission project. These are all the NASA projects, the INSAR topography, Mariner 2, etc. and the Envision mission by Europe. So I have Japan, Russia, Europe and NASA having important missions in Venus and to study the Venus. Now coming to the structure of Venus, right?
दिस इज व्हाट वीनस लुक्स लाइक. आई हैव टेकन दिस पिक्चर फ्रॉम नासा. तो अगर अर्थ में 10 फीट का डंक है तो वीनस पर 11 फीट हो जाता है, राइट. उसका एटमॉस्फेयर काफ़ी थिक है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज इज मोर देन 95%. In fact, it is roughly, if I go roughly, it is more than 95%. To be precise, it is nearly 96.5%. और नाइट्रोजन जो गैसेस हैं प्लस अदर गैसेस आर ओनली 3.5 गैसेस. सो द एटमॉस्फेयर इज एक्सट्रीमली थिक. द मेटल कोर is not known whether it is solid like earth or it has liquid core or whatever is the state, it is not yet known. और हमको इसका magnetism जो है, why Venus has such weak magnetism, is it because the core is not solid? We need to make that assessment as well, right. Venus is often visible to our naked eye. इसको generally morning star भी बोला जाता है. It is called the twin, and the environment is actually quite inhospitable, but it is a terrestrial planet that we still aim to study. Now coming to another important concept from universe, which is dark matter. चलिए डार्क मैटर हमने कहाँ से ये कॉन्वर्सेशन शुरू करी थी. डार्क मैटर एक्चुअली, डार्क का मतलब ये नहीं है कि कुछ खराब है या इट इज लेट अस से डिटोरिएटिंग और इट इज डैमेजिंग. डार्क बिकॉज वी हैव नो आइडिया अबाउट इट. इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं जैसे डार्क एजेस. यूरोप का वो पार्ट हिस्ट्री का जिसके बारे में हमको नहीं पता, हम उसको डार्क एजेस बोलते हैं. सिमिलरली अगर मैं यूनिवर्स के बारे में बात करूं तो ये टोटल मैटर जो नोन है, विच आई नो अबाउट, इज रफली ओनली 30%. और जो डार्क एनर्जी है वो मेरा मेजॉरिटी 70% है. सिमिलरली जो रेगुलर मैटर जिसको मैं जानती हूँ दैट इज ओनली 20%. 80% इज द डार्क मैटर. और ये रेगुलर मैटर इज ऑल द गैलेक्सीज एंड डस्ट एंड स्टार्स, एवरीथिंग टुगेदर इज नोन एज द रेगुलर मैटर. यानी मेजॉरिटी ऑफ द मैटर इज स्टिल अननोन टू मी. सो व्हाट एग्जैक्टली इज द डार्क मैटर, राइट. So unlike the normal matter, I have taken it in the infographic, the dark matter does not interact with the electromagnetic forces. आपका जो यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग है, it can be understood through 4 forces: the magnetic force or the electromagnetic force, the gravitational force, the weak nuclear forces and the strong nuclear forces. Strong nuclear forces, nuclear fission, nuclear fusion. Weak nuclear forces, gravitational waves, the neutrinos, photons, etc. मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का जो इंटरेक्शन है, दिस हैज़ गिवन अस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नोन मैटर. लेकिन जो डार्क मैटर है ये इन नोन फोर्सेस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से इंटरैक्ट नहीं करता. इस वजह से इट बिकम्स वेरी एक्सट्रीमली टू डिटेक्ट एंड टू बी अंडरस्टूड. सो इट डज नॉट एब्जॉर्ब, रिफ्लेक्ट और एमिट light. Hence it becomes extremely difficult to study or even to assess. तो मेरा जो ordinary matter है, this is also called as baryonic, is less than 5% of the entire mass of the universe. I'm talking about the mass, right? Rest of the universe is made up of mysterious and invisible substance which is called as dark matter. Dark energy क्या होती है सर? Sir and ma'am, dark energy is the name given to the mysterious force that is causing the expansion. आपका universe is expanding on its own, but it is also kept together. तो ये बोला जाता है, it is believed that it is the dark energy, it is that mysterious force that is causing the rate of expansion of our universe over the time. Rather than to slow it down, you are accelerating the expansion. And dark matter is what is giving the galaxies its gravity and keeping it intact. Yani dark energy is leading to expansion and dark matter is keeping the galaxies together. Both of them are unknown. We have less knowledge, hence the word dark. Right? Now coming to the journey of the star. ठीक है, क्यों जर्नी ऑफ द स्टार बहुत इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इन न्यूज आई सी सुपर जाइंट, फिर एकदम से आई सी अ वाइट डॉर्फ, देन कहीं पर मैं देख लेती हूँ रेड जाइंट. मुझे इन सब के नाम नहीं समझने, मुझे इनके नाम याद नहीं करने, मुझे बस समझना है कि एक स्टार की जो जर्नी होती है वो कैसे आगे बढ़ती है.
जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई लुक एट दी current affairs material or article that sun is a very small planet to become a black hole. What do I mean by that? So let us start. Take your sweet time to understand this. It is very important for your prelims and even for your mains to some extent. Now, सबसे पहले nebula is what is believed to be the beginning of the journey of star. तो सबसे पहले nebula हुआ, जो nebula हुआ उसके पहले प्रोटोस्टार बना, नेबुला के बाद प्रोटोस्टार बना. सबसे पहले एज पर नेबुलर थियोरी द इनिशिएशन ऑफ द यूनिवर्स स्टार्टेड एंड देन क्रिएटेड द प्रोटोस्टार बिफोर बिकमिंग द स्टार. तो प्रोटोस्टार होता क्या है? प्रोटोस्टार लुक्स लाइक अ स्टार बट इट्स कोर इज नॉट येट हॉट इनफ फॉर द न्यूक्लियर फ्यूजन. द कोर इज नॉट येट हॉट इनफ कि उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन हो पाए. न्यूक्लियर फ्यूजन, अगेन द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, न्यूक्लियर फ्यूजन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इनटू अ स्टार. आपके हाइड्रोजन के आइसोटोप्स दे फ्यूज टुगेदर टू मेक हीलियम एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड विच इज माई न्यूक्लियर फ्यूजन. दिस रेड जाइंट इज द नेक्स्ट स्टेज. तो पहले मेरा बना स्मॉल स्टार. स्मॉल स्टार के बाद रेड जाइंट्स क्या होते हैं? स्मॉल स्टार फॉर एग्जाम्पल सन, राइट. इसी के पैरेलली मेरा मेन सीक्वेंस स्टार, मेन सीक्वेंस स्टार भी योर नॉर्मल स्टार, इवन योर सन इज कॉल्ड एज द मेन सीक्वेंस स्टार विच इज अ फंक्शनिंग स्टार. तो मेरा जो मेन सीक्वेंस स्टार है, राइट, इट फ्यूजेस हाइड्रोजन एटम्स टू हीलियम एंड अ नॉर्मल स्टार इज बॉर्न. लेकिन अब क्या हो रहा है? एक तरफ रेड जाइंट बन रहा है, एक तरफ रेड सुपर जाइंट बन रहा है. रेड जाइंट और रेड सुपर जाइंट कैसे बन रहे हैं? Red giants are hot enough to turn the helium at their core into heavy elements like carbon. अब मेरा जो helium है वो धीरे धीरे the star is running out of fuel or hydrogen. When the star is running out of hydrogen, it converts into a red giant. So what is a red giant? Red giant is formed when a star runs out of hydrogen at its core and start fusing the hydrogen into helium just outside the core. ठीक है. और एक्सपेंशन शुरू होता है, स्टार मेरा एक्सपैंड होने लगता है, स्टार्ट्स लुकिंग लाइक अ जाइंट. तो रेड जाइंट इतने गर्म होते हैं, दे आर हॉट इनफ दैट दे टर्न द हीलियम एट देयर कोर इनटू द हेवी एलिमेंट सच एज कार्बन. यहाँ से कार्बन फॉर्मेशन शुरू हो रहा है. इसी के पैरेलली जो लार्ज स्टार्स होते हैं या मेन सीक्वेंस स्टार्स होते हैं, दे एंड अप क्रिएटिंग रेड सुपर जाइंट्स, राइट. सो व्हाट एग्जैक्टली आर रेड सुपर जाइंट्स? जब बड़ा रेड जाइंट it condenses, it heats up further and creates a supergiant. And then this supergiant, when it explodes, then it creates a supernova. Explosion is basically the death of the star. When the star is not big enough for explosion or for supernova, अब supernova कैसे कैसे हो सकता है? It can be through re-ignition of nuclear fusion or degenerate star, और द ग्रेविटेशनल कोलैप्स, आपकी कोर ही कोलैप्स हो गई है तो आपका पूरा का पूरा स्टार एक्सप्लोड हो जाता है. वन इज अगर न्यूक्लियर फ्यूजन दोबारा रीजनरेट हो गया या मेरी कोर ही कोलैप्स हो गई, देन द स्टार स्टार्ट्स एक्सप्लोडिंग विगरसली एंड इट इज कॉल्ड एज सुपरनोवा. इन द सेकेंड केस विद द रेड जायंट आपका प्लैनेटरी नेब्यूला बन रहा है, यानी कि द स्टार हैज रन आउट ऑफ फ्यूल. द स्टार विल कोलैप्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी and the outer layers are ejected into the space. तो इसमें मेरी outer layers, जैसे generally हम star के साथ coronal ejections पढ़ते हैं, but that is when the star is functional. But now the star is dying, it is going to collapse under its own gravity, और जो remaining gases या plasma होती है, it is left out in the space. And then it converts into a white dwarf. Sun will convert into a white dwarf. That is the last stage. When the star does not have any fuel, it has died out, it does not have any fuel, and it has very degenerate matter but has very high density, it is called as the white dwarf. White dwarf, black dwarf कब बन जाएगा? जब वो थोड़ी भी एनर्जी या लाइट एमिट करना बंद कर देगा, when it stops emitting the light. Now coming back to the red giant, that journey. So red giant will explode, become a supernova, and supernova will then end up becoming a neutron star. So you should have it in mind. Nebula, beginning. Protostar, small star. Small star, red giant. Red giant,
when running out of fuel will convert into planetary nebula. That is, the core is collapsing and the plasma or the gases are released into the universe and then converting into white dwarf and then black dwarf. Then coming to the larger stars, protostar, large star. Large star, when starts running out of fuel, converts into a red supergiant. When the red supergiant explodes, it becomes a supernova, and the supernova ends up becoming a neutron star. One way it will become a neutron star. What is a neutron star? That the proton and the electrons are left after the supernova and they are forced to combine to make the dense neutron star. If the neutron star is not made, then it becomes a black hole. Right? What is the black hole? Black hole is when the mass is significantly greater, the gravity will be so strong that it will shrink further and create a black hole and will draw everything towards it. So much so that even the light cannot get out of black hole. Very important. So what is a black hole? Black hole is after the explosion, after the supernova, if the star does not become a proton star, it becomes a black hole. पहली चीज, only big stars can become black holes. Black hole में इतनी strong gravity होती है, the gravity is so strong that it pulls everything towards it, even the light cannot go out. ये कब होता है? When the star is dying. Now we know that. Presence of black holes can be inferred by the effect on their nearby object and by studying of gravitational waves. Why do you need to understand or study black holes? To understand the functioning of gravitational force and how the universe was formed. So, by studying the journey of the star, I have also understood what are black holes. These are the points. Now, within the black hole, you can see this spaghetti type movement of a star. It is called as tidal disruption event. Why am I teaching you this? Because recently you would have seen a news that there is a black hole which is nearing our particular solar system or our sun. So क्या होता है जब एक ब्लैक होल एक स्टार को रिप अपार्ट कर देता है? अगर ब्लैक होल किसी स्टार के बहुत पास हो जाए, whenever a black hole nears a star or comes too close to a star, it rip aparts a star, and in that event it is called as the tidal disruptive events. It looks something like this, right? So the when the star comes close to a black hole, the gravitational forces will stretch the star. As you can see, this is the stretching of the star. Why? Because the gravitational forces are too high here. And this elongated material then starts spiraling around the black hole. As you can see, this material is spiraling around the black hole. And this can be detected by us humans light years away also. And this is called as the tidal disruptive event or TDE. So, we started with understanding of the star, the journey of the star, what are black holes, what are tidal disruptive events, and now let us understand very important topic which is gravitational waves. Why gravitational waves? सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थियोरी ऑफ रिलेटिविटी में ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में बात करी थी. मैंने आपसे बोला है 4 फोर्सेस: ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस. Can I call the black hole as a result of strong gravitational force, whereas the proton star an example of strong nuclear forces, right? तो gravitational waves सबसे पहले डिटेक्ट हुई थी 2015 by an experiment called as LIGO, which is called as the Laser Interferogravitational Wave Observatory. This effect was first predicted by the Einstein's general theory of relativity. So what exactly are gravitational waves? These are the ripples in the space-time traveling at a speed of light in the universe. These are ripples in the space-time. जब आप किसी पॉन्ड में आप पत्थर फेंकते हैं तो वो जो रिपल्स क्रिएट होते हैं, these ripples are something similar. इसका एक और एक्सपेरिमेंट होता है. इफ़ यू टेक अ क्लॉथ एंड यू पुट एन आयरन बॉल, उसके अराउंड जो रिपल्स होते हैं दे ऑल्सो अपीयर लाइक ग्रेविटेशनल वेव्स. वाई डू आई स्टडी ग्रेविटेशनल वेव्स एंड व्हेन आर दे क्रिएटेड? एक जनरल आप चीज़ समझ लीजिए, कभी भी यूनिवर्स में कोई भी मेजर इवेंट होगा, कोई ब्लैक होल फॉर्म होगा,
two stars colliding, orbiting each other, moving at a very high speed, anything, it will create gravitational waves. So, when are gravitational waves created? When a star explodes, that is supernova, we have done recently. When two big stars orbit each other, when the objects move at a very high speed, and when two black holes they orbit each other. In either of these cases, the gravitational waves are formed and they can be detected through LIGO. India is also part of the LIGO experiment. Right? So this was about black hole, everything about the black hole and the gravitational waves. Now coming to another important aspect, these are some general topic which you will see in some current affairs, in your study also during your preparation. For example, आपके साइंटिस्ट ने मून की सॉइल के साथ दो चीज़ें करी. Your first mission in which a human traveled or walked on the moon was Apollo mission. अपोलो मिशन के टाइम में दे ब्रॉट बैक दी लूनर सॉइल. दिस लूनर सॉइल वॉज न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल. इसमें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं थे और इसमें मैंने दो चीज़ें करी हैं. वन, मैंने ल्यूनर सॉइल से पहले ब्रिक्स बनाई थी, अब मैंने मार्शियन सॉइल के साथ भी बनाई. तो मैंने सबसे पहले ल्यूनर सॉइल के साथ ब्रिक्स बनाई है जो कि मार्शियन सॉइल के साथ भी बनाई है. अब व्हेन आई ब्रॉट बैक दी सॉइल सैंपल्स फ्रॉम मार्स यूजिंग दी रोवर, राइट. और दूसरी चीज़, मैंने first time I have successfully grown the plants on the moon soil. So first time the plants on the moon soil have been successfully grown. So what is the lunar soil or moon soil called? It is called as the regolith. कब आई थी ये? अपोलो एरा के जो एस्ट्रोनॉट्स थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड द कंपनी, दे गॉट देम. रिसर्चर्स ने इसके ऊपर एक वेराइटी ऑफ प्लांट्स जिसको बोला जाता है एरिबेडोप्सिस थालियाना, जो कि यूरेशिया और अफ्रीका का नेटिव प्लांट है. इट इज़ सिमिलर टू ब्रोकली, कैलीफ्लावर एट्सेट्रा. दे हैव सक्सेसफुली ग्रोन इन दी मून सॉइल. नाउ रिकॉल व्हेन आई वाज टीचिंग यू आर्टेमिस मिशन एंड द चंद्रयान मिशन, आई टोल्ड यू that not only you will try to establish life on moon, but you will also use it as a pit stop for your different missions further. Apart from this, the ISRO scientists, researchers from ISRO and the Indian Institute of Science have created space bricks by using the Martian soil with the help of bacteria and urea. Extremely important for your prelims. इससे पहले lunar soil से भी bricks बनाई जा चुकी, right? Apart from that, India has for the first time declared dark sky reserve at Hanle. Hanle is a place in Ladakh. Now sir, what is a dark sky reserve? डार्क स्काई रिजर्व वो जगह होती है जहाँ पर मिनिमम लाइट पोल्यूशन या लाइट इंटरफेरेंस होता है. सो इट इज़ दैट ट्रैक्ट ऑफ लैंड और रीजन विच डज नॉट हैव आर्टिफिशियल लाइट इंटरफेरेंस, वेर यू फाइंड मेजॉरिटी ऑफ द लाइट इन द नेचुरल फॉर्म. सो दिस इज़ वेर द ऑब्जर्वेटरी विल बी मेड. सो Department of Science and Technology will establish the first dark reserve here. It is also part of the Changthang Wildlife Sanctuary. The highest site for optical infrared and gamma ray telescope is also at the Hanle in Ladakh. So this was my attempt at covering the current affairs as well as the basics of space technology. Then there are certain few topics such as Goldilocks zone. What is a Goldilocks zone? Goldilocks zone is that habitable zone which you are trying to search in the outer space where the life is possible. So when I say I am trying to find planets which are similar to Earth where the life is possible, I am trying to find the Goldilocks zone. We have already done Lagrange points. Then you have something called as space debris. Now what are space debris? Space debris are the fragments of anti-satellite missions, redundant satellites which are orbiting around Earth and creating pollution. Space debris is a type of pollution which is created in the orbits around the Earth, right? So आपने general एक understanding I hope you have developed from space technology. If you have any queries, do reach out to me. I'll try to help you. You can ask your questions in the comment section also, and please let me know if you like the session. I will come up with the next technology. Till then, stay tuned. Thank you so much.